Hello. 1 minute, sir. Okay. Good evening to all. Now I welcome Dr. H.K. Singh. He is PhD in Mechanical Engineering from Center of Excellence Renewable and Sustainable Energy. He is certified from SRA member, lead Griha and IGBC professional. He is a senior HVAC engineer and freelancing in project and training in the field of thermal comfort in buildings, HVAC, green building energy simulation, thermal energy storage system, solar PV, and thermal design and installation. Also provides support and training to the various consultancy services and universities. He published more than 60 research papers in reputed international journals with total citation of 26. Welcome, sir, and thank you for the invitation. Okay. Thank you, sir. आवाज आ रही है सर? Yes, Hello. sir. Yes, Okay. sir. Okay. Shall I start? Okay. Good evening, everyone. This is Dr. H.K. Singh. Today, I welcome you all in workshop on basics of HVAC and RAC, which is organized by Jeet Jodhpur. And today, my topic is classifications of air conditioning systems. Here are topics to be discussed: DX and coil water circulating system, radiant cooling, inverter air conditioning, VRF, VRV, vapor absorption system, solar hybrid air conditioning, thermal energy storage, cooling and heating, cabinet unit heater, and heat recovery wheel. Introduction. So the first modern air conditioner was invented in 1902 by Wills Carrier. After that, if we'll discuss about some energy consumption in HVAC, an estimation of 40% of total energy is consumed in residential building and 50% of HVAC systems. इन शॉर्ट में बात करें तो टोटल जितना जनरेशन होता है पावर का वर्ल्ड वाइड, उसका 40% केवल कहाँ कंज्यूम होता है? बिल्डिंग्स में. और बिल्डिंग्स में अगर हम HVAC की बात करें तो उस 40% में 50% केवल HVAC में कंज्यूम होता है. तो उससे क्या होता है? नेक्स्ट जो हमारे हार्मफुल इफेक्ट है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज मोर पावर कंजम्पशन मींस मोर पावर फ्रॉम थर्मल ग्रिड, और जितना ज्यादा थर्मल ग्रिड में कोयला जलेगा या दूसरे फ्यूल जलेंगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन होता है और दूसरे इफेक्ट जनरेट होते हैं. सो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इन इंप्रूविंग फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इन HVAC. As we know that HVAC industry is growing with 9.1% every year, so it is a huge potential in this. Now कूलिंग टेक्नोलॉजीज, अगर कूलिंग टेक्नोलॉजीज की बात करें इस टाइम अवेलेबल टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आपको मिलेगा AC, चिलर्स, इवेपोरेटिव कूलर्स, थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग, अर्थ टनल कूलिंग, पैसिव कूलिंग एंड थर्मल एनर्जी स्टोरेज. तो हम आने वाले टाइम में अभी वन बाई वन डिस्कस करेंगे सारी टेक्नोलॉजी. ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बात कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको एक्सप्लेन कर सकूं. सो थर्मल कंफर्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट HVAC तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है HVAC में थर्मल कंफर्ट. क्योंकि HVAC हम क्यों यूज करते हैं? HVAC बेसिकली इज यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑक्यूपेंट्स एंड इक्विपमेंट्स which follows 4 basic parameters: temperature, humidity, air velocity and air quality. टेम्परेचर रेंज जो है थर्मल कंफर्ट की वो 24 to 27.5 डिग्री सेल्सियस, बट इन जनरल अगर आजकल जो एसीज आ रहे हैं उसमें गवर्नमेंट के भी नॉर्म्स है 24 पे हमको सेट पॉइंट देना है, यानी 24 से नीचे हम नहीं करेंगे. इसका रीजन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या होता है उससे. ह्यूमिडिटी जो थर्मल कंफर्ट के लिए मेंटेन की जाती है 40 to 60%. 40 to 60% इससे ह्यूमन कंफर्ट. अगर हम बात करें कई दूसरी जगह पे जैसे कोई कोल्ड स्टोरेज है तो वहाँ हो सकता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए होती है, बट इन जनरल फॉर थर्मल कंफर्ट फॉर ह्यूमन 40 to 60%, air velocity 0.8 to 4 meter per second, and air quality free from pollution and other particulate matters. In classifications of air conditioner, we can classify window, split AC. Split AC can be further classified as wall mount, casket, tower, or concealed. Then packaged, water cooled, air cooled, central air conditioning, then direct expansion, chilled water,
AHU and FCU, and VRF and VRV are the technologies that will be discussed little later. Comfort and precision air conditioning. Vapor compression refrigeration circuit. This is a basic cycle of all the systems discussed previously. यानी जो भी हमारे systems हम लोग discuss कर रहे थे एक वेपर कंप्रेशन के लिए, इसमें ये एक बेसिक साइकिल है जिससे हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं. दिस इज कंडेंसर, दिस इज कंप्रेसर, दिस इज इवोपरेटर एंड दिस इज एक्सपेंशन वाल्व. तो ये 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं. इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन बेसिक एलिमेंट्स जो अगर हम देखें तो 4 ही होते हैं जो कि आपको सभी जगह इसमें मिलते हैं. साइज अकॉर्डिंग टू, और जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिट है या पैकेज यूनिट है, राइट. तो हम ज़्यादा डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे, फिर आगे देखते हैं. हीट पंप्स. अच्छा, हीट पंप्स इज बेसिकली वर्क ऑन द वेपर कंप्रेशन सिस्टम. सेम सिस्टम है बट थोड़ा सा डिफरेंस किया अगर आप देखें डिजायर्ड इफेक्ट का. कि हमको डिजायर्ड इफेक्ट क्या चाहिए होता है. जैसे कूलिंग के लिए अगर हम डिजायर्ड इफेक्ट बात करते हैं तो एवोपरेटर, बिकॉज कूलिंग कहाँ पे होती है, एवोपरेटर में. सिमिलरली अगर हमको कंडेंसर, यहाँ पे क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है. तो जहाँ पे हमको हीटिंग चाहिए होती है उस केस में क्या होता है, हीट रिजेक्शन चाहिए होता है. तो हीट पंप में बेसिकली हमको ये कंडेंसर जो है हमारा डिजायर्ड इफेक्ट हो जाता है. ये कंपोनेंट्स हैं कुछ देखने में, जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे लगते हैं. कंप्रेसर कुछ इस तरीके से दिखता है. एवोपरेटर कुछ नहीं होता, एवोपरेटर बेसिकली है रेडिएटर. तो रेडिएटर क्या होता है, इसमें फ्लूइड, लिक्विड और एयर का हीट एक्सचेंज होता है. कंडेंसर भी वही है, सेम वही पार्ट है, साइज बड़ा हो जाता है. एक्सपेंशन वाल्व कुछ इस तरीके से दिखते हैं. देन दिस इज ए कंप्रेसर. तो कंप्रेसर के हम क्यों डिस्कस करें, कंप्रेसर कई कैटेगरीज के हो सकते हैं. तो इसमें एक है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर. ये क्या होता है, कंप्रेसर जब हम बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग होगा, स्क्रू कंप्रेसर होगा, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होगा. तो इसके यूज के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग उसको यूज करते हैं, और दूसरे पैरामीटर्स भी होते हैं जैसे कि COP वगैरह है या मेंटेनेंस है, तो वो उसके अकॉर्डिंग होता है. तो ये एक 2 सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे. इसमें पिस्टन होता है, जैसे हमारा IC इंजन में पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है. ये टू एंड फ्रो मोशन से इसको कंप्रेस करता है गैस को, और फिर आगे उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं. परफॉर्मेंस ताकि हम क्या बात करते हैं, COP. COP इज द पैरा. साउंड नहीं आ रही, अभी आ रही है, अभी आ रही है. अच्छा, थोड़ा मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया. ओके, ठीक. अच्छा, COP अगर हम बात करें, COP बेसिकली परफॉर्मेंस इवैल्यूएटर. ये COP किसी भी सिस्टम का परफॉर्मेंस बताता है. जैसे अगर इसका ये इंडस्ट्रियल फार्मूला, 2 फार्मूले हैं, एक इंडस्ट्रियल फार्मूला है, एक आपका थर्मोडायनेमिक फार्मूला है. इंडस्ट्रियल फार्मूले में डिजायर्ड इफेक्ट, किलोवाट एंड वर्क इनपुट. तो डिजायर्ड इफेक्ट बेसिकली आपको क्या चाहिए, अगर हम बात करेंगे एयर कंडीशनर की, तो उसमें इवोपरेटर पे होता है. तो कूलिंग जो है इवोपरेटर, वहाँ पे हम किलोवाट रेफ्रिजरेशन लेंगे. और अगर हीट पंप के बारे में बात करें तो हीट पंप में क्या होता है, हमारा जो कंडेंसर साइड है उसका हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है. बाकी वर्क इनपुट तो कंप्रेसर से होता है, वो सेम रहता है. तो अगर आप इसका थर्मोडायनेमिक फार्मूला देखेंगे तो और थोड़ा आपको समझ में आएगा. डिजायर्ड इफेक्ट अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर के इसमें, तो TC टेम्परेचर ऑफ द कंडेंसर. देन हीट पंप में इसमें आपका रिसीवर. तो TH कूलिंग साइड, TH इज द कूलिंग साइड एंड TH इज द हॉट साइड एंड TC इज द कूलिंग साइड. तो कूलिंग साइड अगर हम बात करें तो इवोपरेटर होता है, और हॉट साइड अगर हम बात करें तो कंडेंसर. तो यहाँ पर आप COP अगर आप देखें रेफ्रिजरेटर की, तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा कूलिंग साइड है जो कि इवोपरेटर. बाकी अगर हीट पंप के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका हीटिंग साइड है, दैट इज कंडेंसर. और कोई डिफरेंस नहीं होता, COP बाकी सेम रहेगा. अच्छा, एक टर्म और हम सुनने में मिलता है इसके अलावा, EER, एनर्जी इफिशियंसी रेशो. एनर्जी इफिशियंसी रेशो और COP में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. कई जगह आप चेक करेंगे तो EER इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी में EER और COP को एक ही बोला गया है. लेकिन फिर भी कई बुक्स में अगर आप देखेंगे तो EER को 3.4 टाइम्स ऑफ COP भी बोला जाता है. तो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, तो दोनों को आप देख सकते हैं. इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दैट इज योर IPLV, दैट इज इंटीग्रेटेड पार्ट लोड वैल्यू. तो इंटीग्रेटेड पार्ट लोड वैल्यू को अगर आपको समझना है तो पहले एक छोटा सा मैंने ग्राफ बनाया है, आप इसको समझेंगे. ग्राफ में बेसिकली इस साइड पे हमारा Y एक्सिस पे टेम्परेचर है, और ये जो X एक्सिस है इसमें टाइम है. तो टाइम अगर आप देखें तो मॉर्निंग में 9 PM, देन 9 AM एंड देन 9 PM. इसका मतलब पूरा 24 आवर्स का एक साइकिल बताया है. ये एक मई जून का भी जो हम इस टाइम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसी टाइम का टाइम है, 2018 का डाटा है लगभग, ये जयपुर का डाटा है. तो आप देखेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक
तो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर, जो पीक टेम्परेचर है, और मिनिमम टेम्परेचर। तो मिनिमम टेम्परेचर अगर आप देखें तो मॉर्निंग में सुबह 5 और 6 बजे के बीच में होता है, जो यहाँ पे कुछ 31 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। और मैक्सिमम टेम्परेचर अगर आप देखें तो आपको ये 46-47 दिखा रहा है। तो इसमें नोट करने वाली बात है कि दोनों का डिफरेंस, अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 17-18 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है डे एंड नाइट में। इसका मतलब ये है कि जब डे एंड नाइट में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो जो हमारी मशीन है वो भी सिमिलर बिहेवियर नहीं करती है। तो नाइट में उसकी परफॉर्मेंस कुछ और होगी और डे टाइम में जब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उसका परफॉर्मेंस कुछ और होता है। तो इसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया है 4 पैरामीटर्स में, दैट इज ए बी सी डी। ए को हम बोलते हैं सीओपी और ई आर, जैसे कि मतलब सेम ही चीज़ है, जब 100% लोड पर चल रहा होगा। और बी का मतलब 75% पे, सिमिलरली सी और डी का मतलब 50 और 25% लोड पे होगा। तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके आईपीएल भी निकाल सकते हैं। तो आईपीएलवी की वैल्यू जो है सीओपी और ईआर से थोड़ी सी ज्यादा आती है, हमेशा याद रखिए। तो आईपीएलवी वैल्यू जनरली हर जगह हमको मिलेगी नहीं, सिस्टम में आपको ईआर या सीओपी भी नहीं मिलता जनरली, तो हमको ईआर ही मिलता है। बट आईपीएलवी भी इंपॉर्टेंट टर्म है जब हम बात करते हैं ओवरऑल इफिशियंसी के टर्म्स में। देन क्लाइमेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हम मशीन खरीदने जाते हैं वो क्लाइमेट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे क्लाइमेट्स को 5 पैरामीटर्स में डिफाइन किया जाता है, हॉट एंड ड्राई, वार्म एंड ह्यूमिड, कंपोजिट, टेम्परेट एंड कोल्ड। तो हमारा जो राजस्थान और जोधपुर अगर आप देखें तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में आता है। तो और अगर आप साउथ में चले जाएं तो आपका यहाँ पे कंपोजिट और वार्म और ह्यूमिड। तो वार्म और ह्यूमिड में जो HVAC की परफॉर्मेंस है इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द हॉट एंड ड्राई। इसका मतलब जब हम कोई मशीन परचेज करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट देखा तो आपका ना कर पाए या कुछ प्रॉब्लम आए। आई थिंक ओके। नेक्स्ट इज विंडो एयर कंडीशनर। विंडो एयर कंडीशनर हम सब लोगों ने देखा है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, बट थोड़े से पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसमें क्या एडवांटेजेस है। कॉमनली यूज इट इज चीपेस्ट, सस्ता मिल जाएगा आपको, बट इसमें थोड़ा डिसएडवांटेज है कि सिस्टम लगाने के लिए आपको कोई स्लॉट बनाना पड़ेगा या कोई आपकी विंडो उस तरीके से होती है वो आपको चाहिए होगी मैंडेटरी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसके अलावा पीछे आपके प्रॉपर एयर वेंटिलेशन के लिए स्पेस भी होना चाहिए। बाकी सिस्टम कॉम्पैक्ट होता है, बट लेकिन अगर आप आज के टाइम में देखें तो ये ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑब्सोलीट होने का रीजन ये है कि ये इसमें ज़्यादा होती है और इसकी इफिशिएंसी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका नॉइज एंड वाइब्रेशन की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो हम हर जगह इसको नहीं लगा सकते। तो ये कुछ दिखने में इस तरीके से होता है। अगर कंपोनेंट्स अगर आप देखें तो हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं। देन स्प्लिट एयर कंडीशनर। तो हम स्प्लिट एयर कंडीशनर से भी हम काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हैं, तो है की पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। स्प्लिट एयर कंडीशनर को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट। तो जो आउटडोर यूनिट होती है उसमें क्या क्या होता है, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व। और जो इंडोर इंडोर यूनिट होता है हमारा, उसमें एवोपरेटर एंड कूलिंग फैन लगा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 पैरामीटर से, अगर हम विंडो एयर कंडीशनर के बारे में बात करें तो सारे के सारे एक ही यूनिट में लगे होते हैं, बट यहाँ पे हमने क्या 2 यूनिट में स्प्लिट कर दिया। इसका थोड़ा बेनिफिट क्या है कि थोड़ा एस्थेटिकली अच्छा लगता है, इसको हम ऑफिस में लगा सकते हैं, कोई होटल्स में वहाँ लगा सकते हैं, जाके हम विंडो एयर कंडीशनर नहीं लगा सकते। तो ये बहुत पॉपुलर है, बहुत फास्ट कूलिंग करता है और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इफिशियंट है। कुछ देखने में इस तरीके से लगता है, हम लोगों ने कई बार देखा है इसको। इसमें कुछ अब स्प्लिट एसी में भी कुछ हम कैटेगराइजेशन होती है, लाइक वॉल माउंटेड जो हमने देखा इससे पहले वो वॉल माउंटेड था। फ्लोर माउंटेड कुछ इस तरीके से दिखता है। सीलिंग माउंटेड अभी हम आगे देखेंगे। मल्टी स्प्लिट एसी विद डक्टिंग और विदाउट डक्टिंग भी होता है। एडवांटेजेस जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सुटेबल फॉर हाई कैपेसिटी कूलिंग, आइडियल फॉर लार्ज रूम्स एंड डजंट नीड विंडोज, कोई विंडोज वगैरह या स्लॉट नहीं चाहिए, थोड़ी सी ओपनिंग में हम इसको जाने की जगह होनी चाहिए तो हम इसको फिट कर सकते हैं। ये सीलिंग माउंटेड है, सीलिंग माउंटेड आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिस वगैरह में ये होता है। एक्चुअली स्प्लिट एसी है, बट इसको हम थोड़ा सा डिजाइन, तो ये एस्थेटिकली बहुत अच्छा देखने में लगता है और इसकी कूलिंग भी बहुत फास्ट। अगर आप देखें तो ये जनरली आपको बड़े ऑफिस में और मीटिंग हॉल्स वगैरह में, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह में बहुत ही कॉमन है, ये मिलता है। जैसे कूलिंग बहुत फास्ट है और देखने में पर्टिकुलर अच्छा लगता है, तो जनरली ये यूज़ किया जाता है। तो क्योंकि स्प्लिट एसी की एक लिमिटेशन है, स्प्लिट एसी का जो है 2.5 टन है, इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। तो अगर कॉन्फ्रेंस हॉल बड़ा है आपका तो आप सोच लीजिए उसमें कितने सिस्टम लगाने पड़ेंगे, तो वो उसको अवॉइड करने के लिए हम जनरली ये सेंट्रलाइज सिस्टम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोर माउंटेड। ये कुछ इस तरीके से होते हैं, इसमें पार्ट्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर है, कूलिंग कॉइल्स है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है रूफ।
और शॉर्ट में फॉर ये बेसिकली तो ये जो हमारा विंडो एसी था सेम वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये कि विंडो एसी में हम एक्चुअली आउटसाइड एयर को नहीं लेते हैं, वो रिसर्कुलेटिंग एयर है वो चलती रहती है, इसमें आउटसाइड एयर को भी हम लेते हैं और कुछ और एडिशनल कंपोनेंट भी हम इसको लगाते हैं। तो अगर इसका डिटेल आप लाइन डायग्राम अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आपको देखिए एयर हुड मतलब एयर इनटेक के लिए। एयर इनटेक के बाद एक इसमें हीट व्हील लगा हुआ है। हीट व्हील क्या होता है वो हम आपको लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप समझ लीजिए हीट व्हील से होते हुए ये फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स आपको एयर प्यूरिफिकेशन के लिए। देन इसके बाद ये हमारी मोटर और ब्लोअर लगा हुआ है, ये हीटिंग और कूलिंग के लिए ये जा रहा है। अब इसमें नेक्स्ट ये है आपका रिसर्कुलेटिंग एयर। अच्छा हीट व्हील हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, रिसर्कुलेटिंग एयर यहाँ से वापस आ रहा है। अच्छा विंडोज में एक और डिफरेंस है, विंडोज सीक्वल कूलिंग के लिए काम आता है, जो रूफटॉप यूनिट है हीटिंग कूलिंग दोनों में ही काम आता है, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। तो इस सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखता है। ये रूफटॉप यूं बोलते हैं क्योंकि इसको जनरली हम रूफ पे रखते हैं। Then next is centralized air conditioning system. Centralized air conditioning system हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हम स्प्लिट और दूसरी चीज यूज नहीं कर सकते। सेंट्रलाइज फॉर एग्जांपल लार्जर स्पेस एरिया, फॉर एग्जांपल सिनेमा हॉल है या कोई बड़ी बिल्डिंग है उस केस में, या होटल है उस केस में स्प्लिट लगाना बहुत इकोनॉमिकल नहीं होता। तो इसका बेनिफिट क्या है, सिस्टम आर यूज मैन फॉर लार्ज बिल्डिंग्स, होटल्स, थिएटर, एयरपोर्ट्स एंड शॉपिंग मॉल्स। होल बिल्डिंग इज टू बी कूल्ड, नॉट इकोनॉमिकली वायबल टू पुट विंडो और स्प्लिट एसी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैन नॉट सेटिस्फैक्टरी कूल लार्ज हॉल्स ऑडिटोरियम, बिकॉज यहाँ पे जो विंडो और मतलब बड़े हॉल्स को नहीं कर सकते, इसके लिमिटेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेंट्रल एसी यूनिट, इसका सर्किट डायग्राम अगर आप देखें तो 3 पार्ट में हम इसको कवर कर सकते हैं। एक साइड होता है हाई साइड। हाई साइड अगर आप देखें तो हम इसको, ये दिस इज योर चिलर। चिलर में कुछ भी नहीं है, चिलर में वही 4 बेसिक कंपोनेंट है, कंडेंसर, इवेपोरेटर, कंप्रेसर एंड एक्सपेंशन वाल्व, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया। अब कंडेंसर में जनरली हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे, जो भी सिस्टम है, स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है, उसमें एयर कूलिंग करते हैं। बट अगर इसमें अगर आप देखें तो एयर कूलिंग सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसमें आपका हीट रिजेक्शन और हीट एजेक्शन एडिशन बहुत फास्ट होता है। तो बहुत फास्ट करने के लिए हमको ऐसा फ्लूइड चाहिए जिसकी स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम एयर की बात करें तो एयर की स्पेसिफिसिटी जनरली 1 के आसपास होती है, और वाटर की बात करें तो 4 टाइम्स होती है। इसका मतलब वाटर 4 टाइम्स ज़्यादा हीट कैरी कर सकता है, और सिस्टम बहुत सिंपल भी है। तो जनरली इसमें क्या, कंडेंसर साइड में और इवोपेटर साइड में, दोनों साइड में हम वाटर को सर्कुलेट करते हैं, जो यहाँ पर तो हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और कंडेंसर साइड में हीट रिजेक्ट करता है। जो हीट एब्जॉर्ब करता है यानी कि ये जो वाटर जो है ठंडा होकर जाता है। तो ठंडा होने के बाद जो हमको जहाँ सप्लाई करनी है चिल्ड वाटर से, वहाँ एयर हैंडलिंग यूनिट हम देखेंगे आगे, वो यहाँ पे लगा होता है, तो इसके थ्रू ओके कनेक्शन अनस्टेबल। देन दूसरा साइड है कंडेंसर साइड। कंडेंसर साइड में हमारा सेम वही है, वाटर का जो टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर हाई साइड है तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है यानी कंडेंसर को हम क्या करना है, कूल करना है। तो कूल करने के लिए वाटर को हमको लेके जाते हैं कूलिंग टावर में। तो कूलिंग टावर का बेसिक फंक्शन हमको पता ही होगा, इसमें हम हीट एक्सचेंज करते हैं एम्बिएंट एयर से, जो कि इवोपरेटिव कूलिंग पे वर्क करता है, उसको ठंडा करता है। तो बेसिकली ये सर्किट है, फंडामेंटल सर्किट अगर देखें तो ये है। अब एयर हैंडलिंग यूनिट जो कि इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इस तरीके से। तो एयर हैंडलिंग यूनिट कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होता है। वो सिस्टम जो मैं आपको बता रहा था, वो बिल्डिंग में किस तरीके से दिखता है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो बेसमेंट में जनरली यहाँ पे चिलर रखा हुआ है। तो ये चिलर है, चिलर में इवोपरेटर और कंडेंसर ही दिखा रखा है, बाकी सिस्टम इसमें नहीं दिखा रखे हैं। तो ये जो कंडेंसर से है, वो वाटर मैंने आपको बताया था कहाँ जाएगा, कूलिंग होने के लिए कूलिंग टावर में। तो ये कूलिंग टावर में है, ये वाटर को कूल करेगा इवोपरेटिव कूलिंग पे। और जो आपका लो साइड है, यानी कि जो वाटर है चिल्ड वाटर, वो कहाँ जाएगा, AHUs में। तो AHU इज नथिंग बट ये हीट एक्सचेंजर है। ये क्या करता है, वाटर में और एयर में हीट एक्सचेंज करता है। यानी एयर पास होगी तो क्या होगा, कॉइल्स FCU वगैरह लगे होते हैं उसमें, तो उसकी फिर उसके बाद जो डक्टिंग वगैरह होती है, तो पर्टिकुलर लोकेशन पे इसको एयर को ट्रांसमिट करता है। तो बहुत ही सफोस्टिकेटेड सिस्टम है, लेकिन बहुत ही यूजर फ्रेंडली, और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। और ये आपको जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या नई सिटीज़ बन रही है हमारी, या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हम जनरली ये यूज़ करते हैं, हम स्प्लिट एसी और उसको प्रेफर नहीं करते। ये एयर हैंडलिंग यूनिट है। अगर आप इसका सर्किट डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आउटसाइड एयर आई, फिर ये कूलिंग इफेक्ट, ये हीटिंग इफेक्ट, ये सप्लाई फैन, ये सप्लाई एयर जो कंडीशन स्पेस है, सीधे जो रूम है हमारा वहाँ पे हम सप्लाई करते हैं।
और ये रिटर्न एयर जो रूम से जो रिटर्न एयर आ रही है इस तरीके से। अच्छा, कुछ पार्ट जो रिटर्न एयर है वो तो हम एग्जॉस्ट कर देते हैं और कुछ पार्ट हम लेते हैं, वो डिपेंड करता है अलग अलग फैसिलिटीज पे। जैसे होटल होता है, होटल में 30% आउटसाइड एयर आपको चाहिए होती है, और अगर कोई हॉस्पिटल है या कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है तो वहाँ तो 100% ही आउटसाइड एयर चाहिए होती है। तो डिपेंड करता है अलग अलग कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, तो वहाँ रिक्वायरमेंट क्या है कुछ तरीके से। देन नेक्स्ट आपका चिलर्स है। चिलर्स की कैपेसिटी मे बी 5 या 20 टन्स होगी, पर चिलर्स तो बड़े बड़े कैपेसिटीज में आते हैं आपके 2000, 3000, 5000 और उससे भी ज़्यादा कैपेसिटीज में आते हैं। तो छोटा सा सिस्टम है, तो इसमें अगर आप देखेंगे कि कंप्रेसर, मैंने क्या बताया था आपको पहले कि जो कंप्रेसर के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग कंप्रेसर होता है और उसके अकॉर्डिंग आपके अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो छोटा कंप्रेसर जनरली स्क्रू कंप्रेसर बहुत ही ज़्यादा इफिशियंट माना जाता है आज के टाइम में। स्क्रू कंप्रेसर उसकी लिमिटेशन है अप टू 200 TR, उससे ज़्यादा हम फिर यूज़ नहीं कर सकते, वो हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि स्क्रू कंप्रेसर की एफिशिएंसी जो है, अगर COP के बारे में बात करें तो 6.5 इजीली हमको अचीव कर सकते हैं। देन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बेसिकली क्या होता है, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब साइज़ बहुत बड़ा होता है। मैंने आपको बताया कि चिलर्स के साइज़ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो जो चिलर्स जो हैं आपके, अगर आपका 250 TR से ज़्यादा अगर होता है तो इसलिए हम सेंट्रीफ्यूगली यूज़ करते हैं, स्क्रू या दूसरे कंप्रेसर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ सक्सेसफुल नहीं है। उसकी इफिशियंसी थोड़ी सी कम होती है, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, सेंट्रीफ्यूगली हमको लेना होता है। ये आपका कंडेंसर और इवोपरेटर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये मैंने आपको बताया कि एक हीट एक्सचेंजर है, तो शेल एंड कॉइल हीट एक्सचेंजर आपने पढ़ा होगा। इसमें इस तरीके से शेल बननी होती है। शेल एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है और ये वाटर इनलेट यहाँ से जाएगा और वाटर आउटलेट जाएगा। तो ये रेफ्रिजरेंट वगैरह है इसके अंदर से। अगर हम बात करें इवोपरेटर की तो रेफ्रिजरेंट होता है, और अगर हम इसमें कूल होता है, और अगर कंडेंसर की बात करें सेम ही सिस्टम होता है, बट वहाँ पे आपका हॉट रेफ्रिजरेंट होता है वो हीट रिजेक्शन के लिए। तो बहुत ही सिंपल सिस्टम है, आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो नेक्स्ट है आपका कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर जैसे कि मैंने आपको बताया इवोपरेटिव कूलिंग पे काम करता है। उसका काम है क्या है, कंडेंसर की कूलिंग को, कंडेंसर की जो है आपको कूलिंग करना, राइट। तो कंडेंसर में मैंने बताया चिलर्स के लिए हमको वाटर यूज करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे हीट रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो उस केस में क्या करते हैं, वाटर लेके जाते हैं, वाटर को स्प्रे कराएंगे। इस तरीके से आपको दिख रहा है, दिस इज स्प्रेयर्स। तो यहाँ पे स्प्रेयर करने से यहाँ से एयर आ रही है, दिस इज काउंटर फ्लो। ये आपका काउंटर फ्लो इंड्यूस ड्राफ्ट। इंड्यूस ड्राफ्ट क्यों, क्योंकि सक कर रहा है ये। अगर यहाँ पे फैन लगा होता है ये इसको फोर्स ड्राफ्ट बोलते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन है, जनरली आप ये देखने को मिल जाएगा आपको, बड़ी लार्ज लार्ज कैपेसिटीज में होते हैं। तो ये क्या होता है, ये सिंपल जो हमारा डेजर्ट कूलर है सेम उसी, हेलो, नहीं तो इसमें वो कहाँ आ रहा है, अच्छा ओके, मतलब ओके स्पीकिंग इंग्लिश ओके। तो वापस शेयर PPT. हेलो, Yes, sir. एम आई ऑडिबल? Yeah. Okay, okay. Thank you. So this is basically a counter flow induced draft tower. So basic function of counter flow induced tower, as I have explained, this works on evaporative cooling. So in evaporative cooling, this is a induced draft tower. Why it is induced draft? Because fan is located at the top, air is induced at the bottom, and this is cold water which is coming out from a condenser. So basically the heat is rejected and the water is, the temperature of water delta T we will achieve around 10 to 12 degrees Celsius. It is a huge difference, but we cannot achieve this temperature difference with air. Some dry type chillers are also available, but the COP is always remains less. For example, for dry type chiller, the COP will be in range of 5 to 6, and for wet type, that is for water cooling, you can achieve COP of around 7 to 8 up to now. So this is a comparison of different compressors. So here you can see this is the item number, efficiency at full load, efficiency at part load, efficiency at no load. And this is TR, that is ton of refrigeration, and this is COP. So you can see this is a direct comparison
among all the compressors, that means chillers with different types of compressors such as reciprocating compressor, rotatory vane, rotatory screw, and centrifugal. So in reciprocating compressor, you can see the efficiency at full load is always high for all the 4 categories. Efficiency at part load is important. Why it is important? Because all the time it is not possible that the chiller is running at full capacity. So remember the IPLV, that the chiller is either running at 100% efficiency, 100% capacity, 75% capacity, 50 and 25. That means the chiller is always running at different capacities, and most of the time it is running at part load. So the part load efficiency is much more important, such as for reciprocating it is very high, rotatory vanes it is poor, rotatory screw poor, then poor. Then efficiency at no load, you can see high, medium, poor, and medium. Then on the basis of categorization of TR, then reciprocating compressors are limited up to 5 TR of chiller. Then if you go for more TR, that is more capacity, up to 12 TRs, rotatory vane is used. Then rotatory screw compressor is used up to 250, that I have already told you earlier, that rotatory screw compressor is having very high efficiency, very in terms of COP, but its capacity is limited to 250 TR. But more than 250 TR, we have to go for centrifugal chillers. In comparison of COP, you can see there is a direct comparison. This is not the this is not the exact value, but you can have a good idea that COP for reciprocating compressor is limited to 3.5, then up to 4 for rotatory vane, 6.5 for rotatory screw, and for centrifugal, it is up to 7.5. Next one is district cooling system. So district cooling system is almost similar to the centralized AC or chiller. The difference is because district cooling is used for different buildings. Maybe it is possible that for single chiller is possible for delivering for 1 building or 2 buildings. But what if in the case of whole city, that I have given an example of all that large. So it is not possible to use different window type or split AC system to each and individual compartment. For that we use, so district cooling system is none other than the centralized chiller, but basically it is of larger capacity, or maybe we can include more number of chillers, maybe 2, 5, 10, and maybe more. So this is the layout of district cooling system. Okay, before that, the advantage is improve energy efficiency, protect services, improve urban view, reduce manpower for operation and maintenance. This is the line diagram of district cooling system. As I've explained you, generally it is used for serving large buildings or many number of buildings. So you can see there's building 1, building 2, building 3, and it is served by a single district heating and cooling plant. Here is one important thing to be noted here is, we include here is thermal storage tanks. Thermal storage tank is generally almost used where we are talking about the system. What is the basic function of thermal storage? But for now, in general, wherever you find district cooling system, the thermal system is also available there. Okay. Now, I think internet connection is okay. Now, the technologies used in HVAC. So the different technologies used in HVAC at present: radiant cooling, inverter air conditioning, VRF or VRV, vapor absorption refrigeration system, solar hybrid air conditioner, thermal energy storage cooling or heating, cabinet unit heater or heat recovery valve. Now we will discuss each and individual technology one by one, starting from radiant cooling. So radiant cooling is very popular now these days, and it came into existence in commercial level. So what is the difference between other technologies that we have discussed earlier or radiant cooling is, basically radiant cooling, the name refers that the cooling is basically done by radiation. So always remember the basic fundamentals of heating: conduction, convection, and radiation. Radiation is one part. So convection in duct system, and in this case is radiant. So what is different in this case is that it is used by radiation. So how does it works? Basically, you can see down, there are some pipes which is installed maybe in the floor or maybe in the top side. It basically doesn't affect that
doesn't matter that we are installing this at the bottom side or the top side. The effect will remain always same. So the first major difference between radiant cooling and convection air cooling is that here the design temperature may be much higher. Now we will discuss how it is much higher and what is the benefit of raising the temperature of evaporator, how it affects the efficiency also. But in case when we are designing air conditioning system, we take two type of temperatures for designing. First one is convection and second one is for radiation. For convection is basically the temperature of air all across the atmosphere, and the radiation is basically radiated by the various surfaces. Surfaces basically your walls, your ceiling, your roof, and your floor, or maybe furniture or the equipment which is placing in your room. So the effect of this radiant cooling is much more effective as convection cooling, and efficiency is 20 to 30% is much more. The reason why we are saying that efficiency is much more, that can be explained here. Because it basically eliminates the fan power. Because in this system, what we are doing, if you will go back, okay. Remember this system, this is a chiller system. In high size system, we are having this pump and this is low side. Here is air handling unit. So what we do in radiant cooling, we generally omit this air handling unit. That means air handling unit is itself consuming some power, which is delivered by fan and motors and all that. So we generally remove this parameters, remove this equipment, this element, which will reduce huge amount of power. Second thing, the requirement of the cooling water is much higher as compared to air handling unit. If I'll give you an example, in air handling unit, if we are using chiller with air handling unit, the requirement of water is around 6 to 7 degrees Celsius. 6 to 7 degrees Celsius. But in case of radiant heat, it is increased from 7 to 17 degrees. What does it mean? It means that the water which is circulating in the pipe, I'm talking for cooling only, the water which is circulating in the pipe, the temperature requires 17 degrees Celsius in place of 7 degrees Celsius with AHU. So it is direct, that means increasing in the evaporator temperature. So there is a direct thumb rule. If we are increasing 1 degree Celsius temperature of evaporator, it will increase your efficiency to 2.5%. So if you can see, there is a increase in 10 degrees Celsius, it is directly correlated that 25% efficiency is directly increases by increasing the temperature of water. And other, as I told you, we are just omitting the air handling unit, which again saving the power. So overall power saving was seen 20 to 30% saving if we are using this radiant cooling. Now these types of technologies are very common in hospitals and large rooms, but not suitable for small rooms and offices. Low maintenance again. The disadvantage, or the only disadvantage of this technology is that it is limited to low humidity. Because if we are having high humidity, there is a possible cases of condensation. That means the water condense may be observed in the room or compartment. That is not desirable at all. The next So the next technology is inverter air conditioner. It is very common now these days. Everywhere you will find this type of technology. So what is the difference between inverter and non-inverter AC can be explained with this diagram, that the setup temperature is within the range of the required temperature. This is ambient, you can see, this is ambient cool, this is ambient warm, this is cool temperature, maybe of space temperature, and this is set point temperature. If you'll see, this is inverter air conditioner. For inverter air conditioner, the temperature will remain in this range of 1 degree Celsius. So this is one benefit. Second benefit is, in non-inverter AC, we are having a reciprocating compressor. Or in this reciprocating compressor, when it starts, then what happens? It consumes 3 times more power as required in the normal operation. That means every time when it starts, it requires 3 times more power. So what is the function of reciprocating compressor? It will cut off and cut on when we are talking about non-inverter air conditioner. So every time it will cut off and cut on, say 10 times in a day or 100 times in a day. So you can imagine how expensive it is. So in the other hand, the inverter AC is very optimized without fluctuation. Okay,
So only drawback of this inverter AC is not drawback, but advantage. Inverter AC is to be used only where for the variable load. That means we are sitting in a conference hall. In the conference hall, load may be variable. So inverter AC is very useful. For other cases, for houses when the load is constant, then we should not recommend the inverter AC because power consumption is almost same in terms of cost. So the inverter AC is 1 to 5 times more costlier as compared to compressor AC, reciprocating compressor AC. Now, working formula for inverter AC is basically it works on the principle of RPM and frequency. It is having a device which is known as variable frequency device, VRF. So when we are talking about VRF or VRV, so VRF or VRV is the same technology. Basically, VRF or VRV, actually it is patented by Daikin and something like that, but almost same technology. It works on the principle of frequency change. So if there is a formula, this is a formula you can see. This is N represent RPM, frequency and number of poles. So if we are varying the frequency, directly affect the RPM. It is directly proportional to RPM. If we are increasing the frequency, it will increase the RPM and decrease the RPM. So it is very effective way to reduce the power consumption. Again, this is a direct comparison. You can see inverter and non-inverter AC. If we are going for tons, 0.751, 1.52 for 3-star AC, normal consuming 830 kilowatt hour, then 550, 830, 725, like this. So this is a huge saving if we'll go for 5-star rating, then savings is appearing more. So this is the direct comparison we can compare. Next one is VRF and VRV, which we are talking about. So VRF and VRV basically variable refrigerant flow. It is generally used for this. You can see here are number of systems, 1, 2, 3, or here it is representing as cooling, heating, but forget about the heating. Suppose all the systems are for cooling purpose. So one case is we can use the separate outdoor unit or condenser unit for all these 3 or maybe many more. But what we are doing here, we are just combining all those things with this single condenser unit. So first of all, what is the advantage? Its maintenance will be very low as compared to different condensers. When we are talking about large hotels or multi-story buildings where they are using individual ACs, then this capacity, number of outdoor units will be many more. So aesthetic appearance is very bad in this case. So avoiding this technology is very common now these days, but it is limited to more than 5 air conditioner. It is recommended when we are using more than 5 split AC, then we should use VRF or VRV system. For less than that, it is not economically viable, right? Okay, the next technology is vapor absorption refrigeration system. So the technologies we have discussed yet so far is basically based on vapor compression system, right? So this is vapor absorption systems. What is the difference? The difference is in vapor compression system, we are having a compressor device, that is compressor. Here you can see there is no compressor at all. One is condenser, generator, absorber, and evaporator. So what is the benefit of this? The benefit of this is basically generally it is used for waste heat recovery plants. In waste heat recovery plants, for example, there is a DG set, right? And there is a DG set, we can have a higher temperature at the stack, that is muffler. We are having a very high heat rate. That heat rate is basically exhausted in the atmosphere, and also it increases the temperature of the atmosphere. So basically what we can do alternatively, we can use a vapor absorption systems. Here is generator. So generator is basically is nothing but it is a boiler. So here we can raise the temperature. The temperature can be raised by the water which comes out from a steam or maybe from other source, that I have given an example of a DG set. So it comes from DG set or maybe from other sources. So it is very useful. This is a additional, actually this is value added system, something like that. Actually the energy which we are wasting earlier, that can be utilized in better way. So it is generally used maximum in waste heat recoveries. The drawback of this as compared to vapor compression system is its COP is very low. Its COP is always less than 1.
But earlier that we are talking about that COP is always greater than 1 in case of vapor compression system. That means for same amount of cooling, we require larger size of the system, right? That means larger size of almost twice, we can say, for the size. That is, it is not feasible for that. We can say it is not feasible for small system. It is used only for larger systems. The next one is introduction. The next one is solar hybrid air conditioner. Solar hybrid air conditioner is a very different technology. Basically, this technology is limited to research purpose only. It is not economically viable, and most of you have not seen this type of technology. But I will discuss, because this is again a technology, one of the technologies. So we can discuss how does it work. This type of system, this is a basically 1 TR system. So it is 40% more efficient as compared to conventional vapor compression system. It is also a vapor compression system. The old system, that means the evaporator, condenser, compressor, and expansion valve, 4 elements will remain same. But the additional equipment which you have placed, that is your solar water heater. So solar water heater is nothing but this is a ETC, evacuated tube collector, which collect the heat from the sun in the daytime, and this is a storage tank which raises the temperature of water. So what happened actually, the refrigerant which comes out from the compressor, then it will allow to pass through this tank, and the temperature of this water in the summer is much higher as compared to this water. That means it heat up more. So what is the function of compressor? The compressor function is basically to generate the pressure. But unfortunately, when we are compressing something, when we are increasing the pressure, then temperature also increases. So temperature has to be rejected from the condenser. Then after that, the high temperature, what happens when we are adding this system, the compressor work is reduced to 40%. So basically we know the heart of the machine is compressor. Compressor is the one which is responsible for consuming the power. So if we are reducing the power of the compressor to 40%, then it will automatically increase the COP of the system. So basically, how does this system works? So this is again not very common, but it is in research state. You can find in MNIT and some research lab. The next one is thermal storage. As we were discussing about the district cooling plant, there is a one element called thermal storage. So thermal storage is basically the heat storage system. It is, or you can say in another word, it is a thermal battery. In thermal battery, what happened? In electrical battery, we store some electrical energy. In thermal battery, we have a chemical or we have a fluid where we store the thermal energy. The best common example is ice. In ice, when it rejects heat, that means water, when we absorb heat from the water, it converts to ice, right? And similarly, when we add heat, when we add temperature to ice, it will again come to the water by melting. So it works on the same principle. On the basis of thermal energy storage, it can be categorized into sensible or latent heat. In sensible heat, when we are raising the temperature of fluid or any PCM, phase change material, working food like water. Water is generally used because it is free of cost and non-toxic in nature. In case of latent heat, we can use different chemical like calcium chloride, hexahydrate. Water is used sometimes for making ice, but we have to reduce the temperature to very low temperature. And the work of compressor is very high. In case, generally water is not recommended for making ice for thermal storage. Now the application of thermal energy storage is when the load are of short duration, infrequently, critical in nature. You can see this is a constant supply and this is a demand. So demand from here to here is constant, then again it peak for a short interval of time. So if we'll increase our supply power to this limit, it will increase the size of our power generation system. So it is again loss. So in this case, thermal storage system is a very good solution. Next one is limited power supply. That means power available for the time is not for 24 hours, say for 12 hours. In case of solar, the power is available in the daytime, but nighttime there is no solar. So it can be used very usefully with thermal storage. Next one is when demand and power supply is not matched. For example, power is required for other time and availability of power is for different times.
Then time dependent. When energy costs are time dependent, that means your tariff is differential tariff. That means on the whole day, the peak time, the tariff of electricity will be higher as compared to night time or some other time. In that case, when the power tariff is low, we can store that energy and we can discharge that at the peak time. As I have the storage can be categorized on the sensible and latent heat. So what is the difference you can see? Okay. Okay. So what is the difference you can see? In the sensible, blue line represent sensible heating. In the sensible heating, the temperature is continuously increasing by supplying of heat. Similarly, temperature is reducing when we are extracting the heat. In case of latent heat, you can see from A to B it is sensible, then from B to C it is changing its phase and stores huge amount of energy. Then from C to D is again a sensible heating or cooling. This is basically different. And the last one is earth tunnel cooling technology. Now again, it is not very popular. It is not commercialized yet now, but it is in research state. It is available in different universities like IIT and MNIT and all that. So it is having a good advantage. It can be used for two-stage cooling that can be discussed further in some other time. But for now, we can understand what is the working principle of this technology. So here you can see this is a layout, this is a land. So what is the property of land? It is irrespective of the ambient temperature. The temperature of land is almost constant to 30 to 35 degrees Celsius, maybe like that. So whether it is winter or whether it is summer, so its temperature is in summer, the temperature you can find maybe 25, 26 degrees Celsius. In winter, you can find temperature of around 35 to 40 degrees Celsius. So it can be easily used for thermal comfort. So what is the basic principle? You can see here the pipe which is digged inside the land. The distance of digging may be 1 to 2 meters, not much more, because when we are digging something, it requires manpower and it consumes your infrastructure cost. So what have seen during the research that the temperature below 2 meters of land, it is uniform. So it is not very useful, economically useful to dig much deeper. So up to 2 meters, it is recommended. And what happens? This is ambient air, you can see. So there is a blower which force the air to blow from this pipe, which is digged. And the distance of this pipe maybe depends on your orientation or your construction site, which types of cooling is required. So like that, then this is transmitted to direct space, right? So you can see there is nothing evaporative cooling, there is nothing HVAC machines, only ambient air. Suppose in the summertime, the maximum temperature now these days, we are observing a temperature of 48 to 50 degrees Celsius. So you can see that the 50 degrees Celsius temperature, it can be reduced to 30 degrees Celsius, 32 degrees Celsius, which is much more compared to the ambient condition. So not very, but we can make a thermal comfort. This is called passive cooling technologies. Actually, we are using ambient. The drawback of this technology is that after heat exchanging, after over a period of time, for example, 2 hours, 3 hours, or 4 hours, the sand surrounded around these pipes becomes saturated. That means it becomes hot. So it is not economically useful to use that more than 3 hours or 4 hours. This is a major drawback. That is why this technology came into your commercialization. This is the basic drawback of this. And this was the last slide. Okay, one more slide is there. Then cabinet unit heater. Actually, yet so far we have discussed the technology only for cooling technology. This is the heating technology is also used in foreign countries like European countries, because the winter days are much more as compared to summer days. But in India, scenario is different. We are observing much more summer days as compared to winter days. So in European countries, we are using cabinet heater is nothing but it's just a heat exchanger. It can be categorized into hot water or electric. Electric heater, convection heater is very common. We are using in our homes at the winter time. So same is that, but maybe varying in size. Hot water is basically the water which is circulated around these heaters by the use of boiler. And boiler can be run with the help of natural gas
In general, natural gas is very common because in America or European countries, they are using natural gas. They are supplying natural gas, so it is very common. So natural gas can be used in boiler, which can raise the temperature of water, and the rest picture is same as for the chiller. In the chiller, we are circulating cold water. Here we are using the hot water from the boiler. Okay. Heat recovery. It is very important, and I think most of you might have not seen this thing. So what is, okay, okay. Now, so what is the use of this technology? Actually, this is used where we are using the outside air. What happened? Suppose 30%, for example, 30% outside air is required for HVAC system. Rest is recirculated. 70% is recirculated and 30% is required from outside. Now, what happens? Suppose take an example of summer. In summer, we are having the ambient air temperature of around 44 degree, 45 degree, 48 degrees Celsius. When it directly enters into the conditioned space, then our HVAC or the chiller system or HVAC system have to work very much to bring down the temperature from 44 to 25 degrees Celsius. So for this case, we can use heat recovery wheel. Heat recovery wheel, sometimes known as enthalpy wheel. Some industry use enthalpy wheels, some called heat recovery wheels, like some called thermal wheels, right? But in general, it is called HRV, at heat recovery wheels. So you can see this is a wheel. Wheel is comprised of a meshing maybe of different material like alumina or maybe different like this. So in picture, it is looking like this. So this wheel is rotating at very low RPM. So here, circulated air which comes out from here, and this is outside air. So basically, the function of this is mixing the inside air and outside air to bring down the temperature. Actually, if we are losing this inside air, recirculating air to the atmosphere directly, it is not very wise decision. So for that case, we can utilize or we can reduce the temperature of ambient air that can bring a huge saving. But this type of systems is used only for large systems where AHUs are used. In small system, it is not used. So this is basic application of heat recovery wheels. And finally, any questions from your side? Thank you so much. Thank you very much, sir. Okay, thank you. Sir, now we can take the questions. Yeah, sure. First question from Yes Kataria. Sir, is it necessary to use the minimum 10 feet copper pipe in the installation of split AC? Sorry, can you repeat the question? Minimum 10 feet copper pipe in the installation of a split AC. Split AC. Yes. Sir. Yeah. In case of split AC, what happened actually? It is assumed. It is assumed that minimum 10 feet of pipe is required because our indoor unit is put inside the room, and outdoor unit is at least you have to put. The reason being because the gas is basically filled with the system, right? There is no top of the gases. So basically, the manufacturer, what they do, they generally fill the gas that thing that at least 10 feet pipe is required. If we'll reduce the pipe, it will generate the pressure on compressor, and maybe functioning is not proper, right? Okay, sir. Now next one is how to control humidity in this system. I know it is used in dry and hot days, but some days the humidity is more. The refrigerant of radiant cooling is water, so water is also produce humidity. No, you are talking about changing radiant the cooling. humidity or okay, in radiant cooling. Yes, can you repeat the question in radiant cooling? Sir, you can see the in question and answer tab. Okay. Due to the network problem, voice is not clear. Second one by the Piyush Goyal. Sir, You just repeat the question. I think it will waste our time. Just repeat the question. Okay. How to control humidity in this system? I know it is used in dry and hot day,
but some days the humidity is more. Okay. The refrigerant of radiant Yeah, cooling is water, so water yeah, is also produce humidity. yeah. Actually, I got it. Actually, your question is that if we are talking about North India, for example, Jaipur or Jodhpur. In Jaipur or Jodhpur, you will also observe humidity in the month of August, right? August or September, not September. In August, you will observe a huge humidity, right? So in that case, what I recommend, you should omit this system. You should use some other system like split AC and all that. So for 1 month or 1.5 month, you should avoid this technology, which is recommended by the manufacturers. What I have heard about it. So there is no technology available. You can reduce the condensation. But what we can do, we can use some split AC in place of radiant cooling, like that. Okay, sir. Now next one is, if radiant cooling is used in large area in Yes, humid days, it yes. fails. So what industry has to do? Has to do. So what action is to be taken? I think this is the same question which I have answered. Anyway, I will answer it again. So actually, I have attended a webinar 3 days ago by the ozone energy, I think, Urja energy, right? So the Urja energy engineers basically function of installing of the large type of radiant cooling system. So what they recommend for the large humidity days, whether it is for southern countries, sorry, southern part of the country or northern part of the country, we should avoid radiant cooling. There is no option. But in case, as I've told you, in case of humidity, the temperature maintained in the water is 17 degrees Celsius. So always remember that the dew point temperature, whether it is large humid months, it is always less than 17 degrees Celsius. So the average temperature of water which is circulating in the radiant cooling is 17 to 80 degrees Celsius. I think it is much more than dew point temperature. The only case of dehumidification is when we bring the temperature less than that particular point. So what they recommended that when they install the system, they maintain the temperature at 17 to 80 degrees Celsius, whether it is southern part of the country or northern part of the country. That will help, that will not develop any kind of dehumidification. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now next one is, please explain vapor absorption cycle. Vapor absorption system. Okay. Yes, sir. Okay. So we'll come back to vapor absorption system. As I have discussed, the vapor absorption systems, there is no compressor. So the major part of this is basically generator. So generator is nothing but it is a boiler which receives the heat, right? So in this case, we generally evaporate the liquid. So liquid or refrigerant we are using is basically two kind of refrigerant. One is lithium bromide and second one is your ammonia vapor. In lithium bromide, water is used as a refrigerant, and lithium bromide, ammonia vapors, ammonia is used as a refrigerant. And the second difference is in lithium bromide, we actually use this use for the temperature of around 5 to 6 degrees Celsius. That means more than 0 degrees Celsius. But in case of ammonia, we can bring down the temperature to negative side. That means -5, -6 easily. So this is the basic difference between the vapor absorption, the lithium bromide and ammonia systems. So ammonia is again very hazardous. Generally, it is not recommended for every purpose because sometimes it may leak and may cause accident. Generally, water or lithium bromide system is generally used for cold storage. It is very common for cold storage. We can use because +5 degrees Celsius temperature can be used for space cooling and for the cold storage also. Okay, sir. Now next one is, in earth tunnel cooling, how relative humidity can control? In earth tunnel cooling temperature, there is no provision for controlling the humidity, right? The humidity is as it is maintained. What I have explained is basically there is a process of reduction of ambient air temperature to the earth temperature. Suppose in summer, peak summer, the ambient temperature is 45 degrees Celsius and the earth temperature is 25 degrees Celsius. So 25 to 40 degrees Celsius, if we exchange, this is a heat exchanger and nothing.
So we can bring down the temperature to 30 to 33 degrees Celsius, or if more than maximum 34 degrees Celsius. So 34 degrees Celsius is not very feasible for human comfort, but it can use as a second stage cooling. So that means once we have reduced the temperature of our internal space to 30 degrees Celsius, then we can use other sources like evaporative cooling or air conditioning. So it will reduce the electricity bill, of course. Okay, sir. Now next one is you have shown ER in your slides. Yes. These ER values are at T1 or T3 conditions. T1 or T3. This one. Yes. Hello. Hello. Yes, sir. What was your question? Question is that these ER values are at T1 or T3 conditions. See, ER is nothing, but it is basically a COP. The formula of COP I have already explained. It is based on there are two formulas. This is thermodynamic formula based on the high temperature side or low temperature side. High temperature side is basically condenser and low temperature side is basically evaporator. And if you're talking about an industrial formula, it is the desired effect. Desired effect is basically the cooling effect produced in the evaporator, or in case of heat pump, the heating effect is produced in the condenser. So basically ER is nothing but it is the COP, right? So it depends on high side and low side. So what I recommend that evaporator side temperature must be higher, right? And the condenser side temperature must be lower, right? So you can see if we increasing the temperature of evaporator side and reducing the temperature of the condenser for case of cooling, then it will increase the COP, right? Okay, sir. Now next one is, sir, is this heat recovery wheels? Hello. Sir, Yes, can you wait for a while? एक second में आया सर. Okay, one second. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Sir, next one is Yes, this sir. heat recovery wheels? Yes. Is this heat recovery wheels comes under descent cooling system? Desiccant cooling, yes. Desiccant. Desiccant cooling system is entirely different. In desiccant cooling system is basically used to absorb the moisture. That means dehumidification process. So if you're talking about the technology, the rotating wheels also available for the desiccant system. But here the system is entirely different. The objective is entirely different. Here we are just exchanging the heat from outside air and the outgoing air which is going out. That means we are just maintaining the temperature I have described, right? These are two very entirely different technologies. Okay. Now next one, same like in heat recovery wheels, does the room air mix with ambient air? Not exactly room air. Actually, what happens? First of all, if there is a room, there should be some inlet and there should be exhaust air, because we have to maintain the pressure. Suppose you are forcing air more and more, then there should be some exit, right? Otherwise, it will create a very different, it will increase the pressure or create the. So inlet air which comes into the conditioned space must be removed or forced out in the same mass flow rate, right? Then the air which is going out, I have given you the example. For example, outside air is required 30%. In one case, 30% outside air is required because we have to maintain the oxygen and freshness, right? Rest 70% is recirculated. So what happens? The recirculating air which comes out from the conditioned space, that going out 30%, that means if we have to add the 30% fresh air, then at the same time we have to remove 30% of the recirculating air, right? So it is basically exchanging of air which is going out. So we have two choices: either we can use heat recovery wheels or we cannot use heat recovery wheels, and this air to be dumped outside, and there is a huge loss. Now the another one is,
Does radiant cooling work on vapor compression cycle? Radiant cooling work on vapor compression system. Okay. Yes, sir. Vapor absorption or vapor compression? Vapor compression. Vapor compression system. Yeah, it is used in vapor compression system because, okay, what I have told you that the source of water is maybe from chiller or maybe from cooler. So of course it can be used for water chillers. Okay. But the temperature should maintain higher. That means in case of without radiating, we have maintained 7 degrees Celsius, right? Otherwise, we have to maintain 17 degrees Celsius. So we can set up the temperature to 17 degrees Celsius, right? Next one is, what is brine solution? Brine solution. Brine solution is nothing when we are adding some salt like NaCl or other salt in water it is used for different purposes, right? It basically turns down the freezing temperature of water. That means we know that the water freezes as 0 degrees Celsius. When we are adding salt, it becomes brine, and it will allow to reduce the melting point temperature of freezing point temperature of that solution -10 degrees Celsius or -12 degrees Celsius or maybe lower, depend on the concentration of the salt. Okay. Now next one is, in master bedroom, which wall is best for mounting the split AC? In bedroom, I would recommend the north side wall. The reason being, in north side wall, you will not observe the solar radiation throughout the day. So because your condenser machine would be kept, otherwise it doesn't matter. You should put in south wall or north wall. It hardly affect because the room has to condition. It has to remove the heat from the room to the outside. So in case if it is possible, you can use north side wall. There will be no air movement in radiant cooling. So how is thermal comfort is felt in the room? No, for that air circulation, we have to use another additional systems like blower or maybe ceiling fan is sufficient. So it is consuming very less power. For example, if you're talking about ceiling fan, it is around 50 watt. So 50 watt is very, very less. So small amount of water, air circulation is sufficient. Okay. Now next one is, sir, can we use heat insulated pipe in earth tunnel cooling? Heat insulated pipe in earth tunnel cooling? No, actually the purpose of heat earth tunnel pipe is to maximize the heat transfer rate. To maximize the heat transfer rate, that means we have to use that material which conducts maximum heat, right? So insulation is basically, that means opposite of that. So I would not recommend insulation. It should be highly insulating rather than. Okay. Next one is, as you said that after using some time, the heat of the soil around the pipe is increased. Yes. Yes. I think question is not clear. And now next one is, what is the material of HRV? Material of HRV, generally aluminum meshing is used. Aluminum meshing, some plastic material is also used, but generally aluminum, plastic, these type of materials are used because it is it does not affect by moisture and having very good heat transfer rate. Okay. Anybody else can put the questions? No. Thank you, sir. Now Okay, invite to Yes Kataria, student chapter president, for the acknowledge. Yes, Kataria. Yes, sir. Thank you, sir, for this great session. On behalf of student Jeet Jodhpur, student chapter, and all the participants, I extend a really heartily vote of thanks to Dr. H.K. Singh, who spared time from his busiest schedule in this lockdown and enlightened us with his knowledge. Today we had an opportunity to learn from you, and this will surely going to help us in future. I welcome you for this great session. Thank you so much. Thank you, yes. Thank you, sir. Thank you.